So this topic is basically about what is meant by perception and what are the different factors involved in affecting our perception and that are very important for all of us. So what is meant by perception? Perception is important for understanding individual differences because how people perceived a situation determines how people behave. परसेप्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए क्योंकि हर इंडिविजुअल अपने नज़रिए से हर सिचुएशन को परसीव करता है और जैसे हम सब इंडिविजुअल्स डिफरेंट सिचुएशंस को इंटरप्रेट करते हैं उसी तरीके से हम different situations में behave करते हैं. So perception is a part of that personal dimension that makes people see situations differently as well as shapes their attitude in different terms of their work environment. Means perception हमारे personal dimension का ही एक पार्ट है जिसमें लोग मुख्तलिफ तरीके से हर सिचुएशन को देखते हैं वही सिचुएशन जिसको वो इंटरप्रेट करते हैं अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उनके एटीट्यूड को उनके बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है इसीलिए हर इंडिविजुअल का माइंडसेट क्योंकि डिफरेंट है तो उनका परसेप्शन भी डिफरेंट होता है और अकॉर्डिंग टू दैट परसेप्शन हर इंडिविजुअल का बिहेवियर दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है. So this lesson seeks to help students in describing these major points. Describe the major element of perceptual process. Identify the main factors that influence what individual perceive and in identifying factors that determine how one person perceives another. So major elements कौन कौन से हैं जब भी हम परसेप्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है या मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमारे परसेप्शन को मुतासिर करते हैं और किस तरह से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट परसीव करता है और यही फैक्टर्स हर इंडिविजुअल की परसेप्शन को इफ़ेक्ट करते हैं. So, perception basically refers to interpretation of what we take in through our senses. So, हम अपने different senses के through मुख्तलिफ situations में different चीज़ों को experience करते हैं, different situations को experience करते हैं, हम किस तरह से उनको interpret करते हैं वो डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पर उनके माइंडसेट पर सो हर इंडिविजुअल उसको अपने परसेप्शन के मुताबिक उसको इंटरप्रेट करे. Perception is a process by which people select, organize and interpret information to form meaningful picture. Perception एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हर इंडिविजुअल कोई भी सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहा हो वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेगा अपने अकॉर्डिंग और उसको एक मीनिंगफुल पिक्चर की फॉर्म में उस सिचुएशन को जनरेट किया जाएगा. हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं उसी के अकॉर्डिंग और हम मुख्तलिफ चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं और यही हमारे परसेप्शन को क्रिएट करता है. So, perception is basically a process by which people select, organize, interpret and respond to information from the world around them. So, according to them, according to different personalities, people, according to their mindset, they used to organize, interpret, give interpretation to and meaning to different kind of situations in their surroundings. So, perception is a selection and organization of environmental stimuli to provide meaningful experiences for the perceiver. Perception के according हम मुख्तलिफ situations में factors के according हम attention देते हैं. इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ताकि
वो हमारे लिए एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस कहलाया जाए. So it provide meaningful experience for the perceiver. The perceptual process consists of the following element. तो ये जो perception process है इसमें different elements involved होते हैं जो कि हमारे perception को भी इफेक्ट करते हैं. Environmental stimuli, observation, perceptual selection, organization, interpretation, and response. So these factors will be discussed one by one with proper explanation. In order to make sense of our world, our brain try to see patterns or shapes that are recognizable. This principle is called grouping. So हम जब भी किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं, हमारा ब्रेन उन चीज़ों को एक ख़ास पैटर्न देता है, एक ख़ास शेप की फॉर्म में रिकग्नाइज करता है, उनकी पहचान करता है. और इसी प्रिंसिपल को ग्रुपिंग का नाम दिया गया है. जैसे डिफरेंट लॉज हैं, उन लॉज के अकॉर्डिंग हम किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं. फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, proximity, continuity, and of closure. So according to these law, for example, in a similarity law, these objects are considered or perceived in the form of group. In proximity, if they are closer and they are in parallel lines, so they are perceived in the form of group. And continuity में different situations की base पर, for example, if there is a continuous pattern, so we will perceive that in continuous lines. And closure so means we will take that image as a whole. The mind forms shapes that does not exist and that don't exist. Actually, मेरा माइंड बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों को परसीव करता है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द concept of illusion. So here are different images given for example. This is also called as the concept of illusion, in which we can perceive according to our own perception. We give means we can interpret according to our own mindset. So every person, when while seeing this picture, they can interpret it differently, and this is called as illusion. So here is an activity which is based upon seeing the color, not the word, which is just perceived differently by different individual, and it depends upon your own mindset, your brain, that your left brain insists on reading the word, but you have to say the color, not the word. So when you look at this figure, you will see either a vase or two faces. If you continue to look, the figure will appear to shift to the alternative organization. Means if we will just give attention to that white area, we can perceive it differently, but when we will give attention to that darker side, our perception will be different. We will perceive it differently. So not all the individuals will perceive this image as the same, but they will perceive it differently. So it depends, and it shows that how our perception differs from one person to another. Any moment you see, this is called as illusion. Actually, our mind is generating and creating such images which are actually not present. So when we say that perception is affected by different factors, so the different factors involved in perception include environmental stimuli as well.
सो परसेप्शन को जनरेट करने के लिए या वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकती है उसमें इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई भी इंक्लूडेड है. People receive stimuli from the environment through their senses. Through different senses, they receive different stimuli. And when they observe their environment, जब भी environment में stimuli को observe किया जाता है, so हम उसे अपने different senses के through perceive करते हैं. Sense of sight, hearing, taste, touch, and smell. So, second one is perceptual selection. When the stimuli are received, a person might pay attention to some of the aspects in the environment and ignore other. जब भी हम perceive करते हैं किसी भी information को हम interpret करते हैं किसी भी situation में जब किसी stimuli को environment में receive किया जाता है so हर इंसान जो है वो इन्वायरमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स को अटेंशन देता है और कुछ फैक्टर्स को इग्नोर करता है. सो दिस फिल्टरिंग आउट ऑफ मोस्ट इंफॉर्मेशन टू डील विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर इज रेफर्ड टू एज सिलेक्टिव स्क्रीनिंग. इस फिनोमिना को सिलेक्टिव स्क्रीनिंग का नाम दिया गया है जिसमें हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर को जो हाईलाइटेड होता है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अटेंशन देते हैं और कुछ फैक्टर्स को हम इग्नोर करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव स्क्रीनिंग. The influence factors are due mainly to external and internal factors. अब जो फैक्टर्स ज़्यादातर हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमारे आउटर वर्ल्ड यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी और इंटरनल फैक्टर्स पर भी बेसिकली हम पर भी डिपेंड करते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशंस को इंटरप्रेट कर रहे हैं और किस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे परसेप्शन को मुतासर करते हैं. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर साइज, इंटेंसिटी, कंट्रास्ट, motion, repetition, novelty, and familiarity. A combination of the above may be operating at any time. So these are the different external factors जिसमें size, intensity, motion, repetition, कोई भी नई चीज़ कोई भी familiar object so या फिर different object हम उनको environment में अगर कोई भी ऐसे factors involved होंगे किसी भी object में so हमारा perception इन चीज़ों की वजह से इन factors की वजह से मुतासर होता है. So the factors affecting perception include different factors, but the two most important factors, internal factors and external factors. Factors that influence perception relate to the perceiver. वो factors जो कि हमारे perception को influence करते हैं different तरीके से perceiver पर डिपेंड करते हैं जो perceive कर रहा होता है जो जिन चीज़ों को perceive किया जाता है और जिन situations में उनको perceive किया जाता है. So different factors हैं जो कि हमारे perception को affect करते हैं. All these factors are of two kinds. First kind is internal factor, endogenous factors भी जिनको कहा जाता है. So the needs and desires are included in the first category of internal factors. An individual's perception about stimuli is influenced by internal needs and desires at that time. So हर individual का perception किसी भी stimuli के लिए किसी भी object के लिए इन्फ्लुएंस होता है हमारी अपनी नीड्स हमारी अपनी डिज़ायर्स की वजह से हमारा परसेप्शन भी मुतासर होता है. सो जो हमारी नीड्स और डिज़ायर्स होंगी एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमारा परसेप्शन उससे हमारा नज़रिया उससे भी मुतासर होता है. सो पर्सनालिटी closely related to needs and desire is the personality of the perceiver. सो ये भी हमारी अपनी डिज़ायर्स और नीड्स से ही लिंक करता है. हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे परसेप्शन को काफ़ी हद तक मुतासर करती है. सो इट इफेक्ट व्हाट इज़ अटेंडेड और परसीव्ड इन द गिवन सिचुएशन. हम
सिचुएशंस में किन चीज़ों को अटेंशन देते हैं हम, किन बातों को प्रायोरिटी देते हैं, और वो चीज़ हमारी पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करती है। सो हम जिन चीज़ों को अटेंशन दे रहे होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करता है और उसकी वजह से हमारा परसेप्शन भी मुतासर होता है। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज सर्व्स एज बेसिक फॉर परसेप्शन। हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा, जो हमारी नॉलेज होगी, उसी की बेस पर हम चीज़ों को जज करते हैं, परसीव करते हैं और एनालाइज करते हैं. So this internal factor is also important and it also affect our perception in different ways. So external factors that affect perceptual selectivity, वो factors जो कि हमारे perception को मुतासर करते हैं, उसमें different external factors involved होते हैं. For example, intensity and size. So the more intense the external stimulus, the more likely it is to be perceived. जितना intense होगा उतनी ज़्यादा हमारी perception effect होगी. So और उतना ज़्यादा अटेंशन उसको दी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अ लाउड नॉइज, स्ट्रॉन्ग स्मेल, ब्राइट लाइट. So size. The larger the object, obviously, the more likely it is to be perceived and will be given attention. For example, full page advertisement is given more attention than just three lines that I've just mentioned. So we give attention according to different external factors that include intensity and size as well. So here are different perceptual errors that affect our perception. Accuracy in judgment is very important, but sometimes similarity error may also occur, assuming that in which people assume that who are similar to us in some ways, people that are similar to us in terms of our background, if we have same interest and hobbies, so we think that they will behave like us as well. So this perception is totally wrong sometimes and it affects our perception. Contrast error. So contrast error mean we compare people to other, so comparing people to other rather than to some absolute standard. So when we compare people to other, we do not compare them with certain kind of standards. So this is called as contrast error. Overweighing of negative information means a tendency to overreact to something that is negative. So this is also a perceptual error in which we sometimes overreact to something negative. Second one, another one is race, age, and gender biasness. So, tendency to more or less positive based on one's age, race, gender. So, according to that, we have personal biasness. So, biasness should not be created on the basis of race, age, gender. So our perception is also affected by these characteristics. So first impression error, forming first impression that are resistant to change. So sometimes we judge people too quickly that we create their image and their impression in the first meetup. So sometimes those creating or giving such kind of impressions are totally and are they are resistant to change, they can be changed. So our perception is totally affected by first impression. So another perceptual error may also include attractiveness stereotype, in which the concept is like people who are attractive are perceived to be smarter, funnier, and more competent than less attractive people.
So this kind of stereotype also affect our perception. This is perceptual error. Halo effect. So halo effect is when one trait of a person or thing is used to make an overall judgment of that person or thing. For example, when we think that or we say that that person is smart, so we can say that if that person is smart, that person may also be nice. So some ways it creates a judgment that is not effective, or that is used to make an overall judgment of that person. So, hollow effect is when one trait of a person or thing is used to make an overall judgment of that person.